Hello everyone, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with another strategy based video on how to start with grade 10. So आज की वीडियो में I'm going to discuss कि this is especially for the students who are moving from ninth to 10th, correct? So in this video, I'm going to discuss कि how should you start your grade 10 examinations. As you know, board exams होने वाले हैं ना. So all those details, the best strategies, the best reference books, correct? Apart from NCRT reference books, strategy, roadmap, everything I'm going to give you today. So before starting, make sure to hit the like button, share with your friends, and jaldi jaldi subscribe karo channel ko so that we can move ahead. So let me tell you today's topics. So first of all, I'll give a quick introduction to why is the need for this session. Second of all, I'll tell you the best strategy and resources. I'll tell you a roadmap for your entire year. And at the end, I'll even tell you about some best reference books you should use ताकि आपके बहुत अच्छे marks हैं board exams में. Starting with introduction. Now, as you know, since maybe grade 7 8 है ना, you might have heard this about grade 10. आपके पेरेंट्स टीचर्स बोलते होंगे कि अच्छे से पढ़ो, grade 10 में बोर्ड्स लिखना है, करेक्ट? So basically, this is actually a exposure. It's a exposure to all the students because क्या होता है, board exam is something which you have never experienced before. Exams तो हर साल ही होते हैं, करेक्ट? एंड में होते हैं, बीच में होते हैं, हर साल होते हैं, करेक्ट? बट बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है व्हेन यू डू नॉट राइट योर एग्जाम इन द स्कूल. आप कोई दूसरे स्कूल में जाते हो, अलग अलग लोगों के साथ बैठ के एग्जाम लिखते हो, उसके बाद वो एग्जाम जाके किधर और कोई भी रैंडम टीचर्स चेक करते हैं, राइट? सो इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, and yet it is a very important one as well. Although ये एकदम न्यू एक्सपोजर होता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कोई भी डिग्री या कोई भी अच्छे कॉलेज में जाना है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप 10th में पढ़ोगे, in 11th onwards you will have to choose something, science, commerce, या humanities या arts, जो भी होता है. You have to choose one based on your grade 10 board exams. Only this stream is selected. Grade 10 के board exams, grade 12 के board exams hold a very high weightage and importance in your future career. Okay. Now, ninth के एग्जाम्स जैसे गए, अच्छे गए, बुरे गए, इट्स ओके, बिकॉज नो वन विल आस्क यू कि आपके नाइन्थ ग्रेड में क्या मार्क्स आए थे. नो, दे विल आस्क यू अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स. सो दैट इज व्हाई द मोटो ऑफ टुडेज सेशन इज कि हाउ शुड वी बिगिन, बिकॉज लोग बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम, बट हाउ शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट इन अ वे that we can score the best out of it, correct? एक ऐसा strategy so that we can ऐसे resources through which we can score the best, है ना? So let us begin. Okay, I hope all of you are ready. Now, what should be a strategy? अभी देखो, मोटो क्या होना चाहिए आपका कि ग्रेड 10 इट्स नॉट अ बिग डील, है ना? यू शुड नॉट कंसिडर इट. जितने आपके चैप्टर्स नाइन्थ में, तो ऑलमोस्ट लगभग उतने ही है आपके 10th में भी, लिटिल बिट अप्स एंड डाउन्स, है ना? नॉट मोर देन दैट, है ना? सो बेसिकली एज पर मेनी न्यूज एंड एवरीथिंग, इट इज सेड दैट योर बैच विल हैव टू बोर्ड एग्जाम्स. Okay, out of which it will be optional. 1 mark will be considered from either of them. या तो फर्स्ट बोर्ड का कंसिडर करो या तो सेकंड का, ऑल ऑफ दैट. बट बोर्ड्स तो होंगे, दैट इज डेफिनेटली ट्रू, करेक्ट? बोर्ड्स का यू हैव फुल सिलेबस, करेक्ट? फुल सिलेबस होता है. सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू इज दैट पूरे साल भर हमको अच्छे से करना पड़ेगा बिकॉज द एंटायर सिलेबस इज गोइंग टू कम, है ना? So the first of all thing is you do not have to delay things. डिले नहीं करना. अच्छा, बोर्ड एग्जाम तो साल के एंड में है. व्हाई शुड वी स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ? दैट इज अ वेरी वेरी बैड माइंडसेट. यू शुड नॉट थिंक अरे बोर्ड एग्जाम तो बाद में एंड में आएगा, प्री बोर्ड एंड में आएंगे, क्यों पढ़ना चालू करें अब से? नो. व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से ही आप अच्छे से फोकस रख के, है ना, पढ़ोगे, देन ओनली बाय द एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, करेक्ट? नाउ सी दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रैटेजी एज इन आपको कैसे पढ़ना है. इनिशियल डेज में, अभी जैसे आपके हॉलीडेज चल रहे होंगे, इनिशियल डेज में व्हाट यू कैन डू इज डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. आपके स्कूल में चालू होगा भी, आपको थोड़ा सा वो लोग एक ग्लिम्स देंगे ग्रेड 10 क्या होता है, करेक्ट? सो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली,
फोकस ऑन योर स्कूल लेक्चर्स। पहले फोकस करो, इनिशियल डेज फोकस करो, तो थोड़े बहुत महीने होंगे, जून जुलाई तक फोकस करो what teachers are teaching, whether it be school, whether it be me, whether it be any other YouTube channel you're searching, any other, wherever you're studying from. Focus on the concepts. Second of all, and a very important thing is note making. नोट मेकिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नोट मेकिंग एंड में नहीं करनी, यू हैव टू मेक इट राइट नाउ, मतलब सारे चैप्टर्स का एक साथ नहीं बनाने बैठ जाओ, नो। ना नोट मेकिंग में क्या करना होता है, आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंटली। नोट मेकिंग में, लेट अस से आप साइंस पढ़ लो, साइंस का सबसे पहला चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ओके। आई लेट मी टेक अनदर स्लाइड एंड एक्सप्लेन। देखो, व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस? आपके साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, करेक्ट? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ देखो, यू वेरी वेल नो कि इसमें क्या होगा। नेम सजेस्ट, यू आर नॉट ग्रेड 5 या 6 के स्टूडेंट दैट यू डोंट नो व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज इक्वेशन, यू नो इट, 9th में भी पढ़ा है। Now what you do, you have to, when you're studying this chapter the first time, है ना, कोई भी आपके स्कूल में पढ़ा रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, राइट? What you have to do is start making notes one by one. कोई हेडिंग डालो सबसे पहले, है ना? What is, जैसे फर्स्ट टॉपिक होगा what is chemical reactions, ठीक है? What is chemical reaction? Then you will write your notes, है ना? एग्जाम्पल क्या है केमिकल रिएक्शन का, देन यू विल राइट योर एग्जाम्पल, है ना? उसके बाद कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, हाउ डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, है ना? ये सारे आप नोट्स लिखोगे। मेक श्योर योर नोट्स आर नॉट वेरी लेंथी, पूरी टेक्स्ट बुक नहीं छापनी है। लाइक if I'm teaching you from PPTs, अब पिछली वीडियोस देखोगे, you will get the PPTs and all. You should not print the entire PPT, नहीं, you just have to write the basic and main points. No matter whichever teacher teaches you, they always tell you what are the main points. अब ये इससे क्या होगा, कमिंग बैक, अब आपने नोट्स बना लिए, जैसे जैसे पूरे साल के एंड तक सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, हर चैप्टर के टाइम आप नोट्स बना रहे हो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब आपके बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स आएंगे या कोई भी और एग्जाम आएंगे, टर्म एग्जाम्स आएंगे, सो यू विल बी इजीली, यू कैन सी, आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हो। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स के एक दो दिन पहले यू कैन नॉट सिट एंड रीड द टेक्स्ट बुक, इट्स वर्थलेस, कुछ नहीं होगा उससे, इट विल बी टाइम वेस्टेज। सो इंस्टेड यू हैव टू मेक दीज नोट्स अपने तरीके से। ऑनलाइन नोट्स मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू यूज दैट, बिकॉज वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखे हैं। वेन यू राइट नोट्स एज पर योर टर्म्स, आपको पता है कि हाँ मैंने लिखा, सो आई नो व्हाट इज इट। यू कैन मेक mnemonics, है ना? You can make mnemonics and try to break down the concept so that it is easier to grasp it. Correct? So that is the importance of note making when it comes to examination. Okay, and then second, so this was the main strategy you have to follow for starting with grade 10. So as I said, and when I say that textbook, now NCRT, correct? NCRT. Do not keep it for the end. एंड में मत रखना, बिकॉज एंड में बोर्ड एग्जाम्स के एक दिन पहले, प्री बोर्ड्स के 2-3 दिन पहले, नो वन इज गोइंग टू सिट एंड रीड द एनसीईआरटी। सो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को डे 1 से पढ़ना चालू करना है। एनसीईआरटी में भी व्हाट, रीडिंग होनी चाहिए, आपको 3 चीजें करनी है, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स में तो कुछ रीडिंग नहीं है ऑफ कोर्स, सो साइंस के लिए रीडिंग, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल एज द एक्सरसाइजेस, मैथ्स और साइंस के लिए स्पेशली। दिस इज फॉर मैथ्स एंड साइंस एक्सक्लूसिवली, है ना? बट व्हेन यू टॉक अबाउट रीडिंग, एसएसटी और साइंस में आप रीडिंग कर सकते हो। एक्सरसाइज एंड इंटेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस साल के भी पेपर में मोस्टली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, बट टेक्स्ट बुक अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कॉम्पिटेंसी भी इजीली कर पाओगे, ओके? सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड कीप नोटेड, ओके? चलो, लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रिसोर्सेज वी शुड यूज। अब देखो, रिसोर्सेज आर वेरी वेरी नीडेड। अगर आपके पास सही रिसोर्सेज है ना, देन एवरीथिंग इज गुड। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, ओके, कितने सारे लोग होते हैं
सारी बुक्स खरीद लेते हैं, जो भी जितनी भी रेफरेंस बुक है, जितनी भी गाइड्स है, जितने भी सैंपल पेपर है, जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स है, सब खरीद के बैठ जाओ। But that's worthless because at the end of the year, you cannot use all of them. You can sit in a bunch of books and study. No. So, what are the proper resources? First of all, year के start से, if I'm telling about the start of the year, I'll divide it into two parts and tell you start में, okay? First is start of the year and then is the end of the year, okay? जो आपका स्टार्ट ऑफ द ईयर चल रहा है, करेक्ट, दैट इज आपके पीटी एग्जाम्स, पीरियोडिक एग्जाम्स होंगे, टर्म एग्जाम्स होंगे, ड्यूरिंग दीज एग्जाम्स फर्स्ट ऑफ ऑल योर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पीटी वन के टाइम में तो नोट्स यूज कर सकते हो ना, किसने मना किया, इट्स योर नोट्स, यू कैन यूज एनी टाइम, नोट्स यूज करो। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी इज हाईली इंपॉर्टेंट, करेक्ट, एनसीईआरटी इज हाईली इंपॉर्टेंट। along with that you can use some reference books। रेफरेंस बुक्स कौन सी रेफरेंस बुक्स, आई विल टेल यू। यू हैव टू को ऐसे नहीं, रेफरेंस बुक बहुत सारी मिलती है, बट व्हाट टाइप ऑफ रेफरेंस बुक, कौन सी कंपनी की रेफरेंस बुक, दैट ऑल आई विल टेल यू बाय द एंड ऑफ द सेशन, ओके। ये हो गया स्टार्ट के टाइम। कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर इज व्हेन यू हैव योर प्री बोर्ड्स and during your pre-boards and board examinations. During that time, what is to be kept in mind is that हमें को क्या लिखना होगा, we have to use proper this, what do we say, reference books, especially previous year questions। previous year questions के ऊपर जो based reference books होती है, those books you can use। again, notes are very important, so these are some important resources you will need। now, when I talk about NCRT, that is highly important. As you know, English की दो है, एक maths, then you have four for economics, history and all, है ना? And that is your entire and science की भी book, right? So NCRT is very much needed. Points highlight करो, you can do highlighting and everything. So that is important for doing NCRT. Okay. Now, next is what will be the entire structure of grade and roadmap. So, first of all, initially when the year starts, you will have periodic tests and a PT test hote and all. So that will be when your school starts PT1, PT2 and all. Then you will get your term examinations where there won't be full syllabus, but half of a syllabus, partial syllabus hota hai, correct? These two will happen in the initial years, correct? These happens in the initial month, not year, initial months. Okay. Now, the most important comes the pre-boards and the board exam। प्री बोर्ड आपके मोस्टली जो स्कूल्स रखते हैं नवंबर, दिसंबर या मैक्स टू मैक्स जनवरी, उससे ज्यादा नहीं होते, उसके बियॉन्ड नहीं जाते। इन दीज डे, इन दीज मंथ्स प्री बोर्ड्स हो जाते हैं। कोई कोई स्कूल दो रखते हैं, कोई कोई स्कूल तीन रखते हैं, कोई कोई वन भी रखते हैं, सो इट्स बेस्ड अपॉन योर स्कूल। प्री बोर्ड में क्या होता है, पूरा सिलेबस होता है, करेक्ट, फुल सिलेबस। along with full syllabus, they give you the paper pattern as per your CBSE। CBSE का क्या पैटर्न बन रहा है, हर साल से कैसे क्वेश्चन, दैट इज ओनली आस्क्ड टू यू। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट, दे आस्क यू मोस्टली PYQs। बहुत रेयर स्कूल होते हैं, ओके, वेरी रेयर स्कूल्स आर देयर व्हिच विल आस्क यू टू आस्क देयर ओन क्वेश्चंस, बहुत रेयर होते हैं। most of the schools ask you previous year questions or CBSE के sample paper questions, they ask you those only। और ultimate आपका गोल था, as you know, board exam, correct। now this was your entire road map कि आपका year कैसे जाने वाला है, correct। whatever marks you get in these two, you should improve if it's low, but do not focus and stress upon these a lot because these two are more important than these, ठीक है। so that becomes your grade 10 का road map। now let's move towards the best reference book। I have classified the reference books into two types। Okay, reference books are divided into two types। First is the type of book, कौन सी तरीके की रेफरेंस बुक, एंड सेकंड इज द कंपनी ऑफ कोर्स। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी बुक्स होते हैं, पीपल और स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज कि हमको कौन सी खरीदनी चाहिए। सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज फॉर योर इनिशियल इनिशियल डेज, ओके, इनिशियल मंथ्स में व्हेन यू हैव योर मिड टर्म्स जा रहे हैं, है ना, मिड टर्म्स एंड ऑल आर गोइंग ऑन, देन यू हैव योर मिड टर्म्स एंड पीरियोडिक टेस्ट, उसमें ये बुक्स काम आती है। where you have theory questions as well as previous year questions, books I will tell you,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ओसवाल की बुक्स आज इट्स अ वेरी वेल नोन कंपनी ओसवाल बुक्स आर बेस्ट फॉर थ्योरी एज वेल एज पीवाईक्यूज जिसमें सारे सब्जेक्ट इंग्लिश साइंस एसएसटी मैथ सारे होते हैं दिस इज फॉर योर लेटेस्ट ईयर ओके इस साल के लिए आपके लिए सो थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज माइंड मैप्स के फॉर्म में होता है एज फार एज आई नो माइंड मैप्स के फॉर्म में होता है ऑल दीज explanations of theories और प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं along with toppers answer sheet as well so you can buy this second after that again for theory and PYQs अगर ओसवाल की जाएगी you can even take together with books as well together with की भी अच्छी बुक्स होती है this is I guess last year's की बुक है 2020 23-24 बैच की बुक्स है but when they release the new one you can take them so when we talk about together with what you have again theory है ना in approximately 3 to 4 pages में पूरा chapters cover कर देते हैं करेक्ट प्रीवियस या क्वेश्चन है टॉपर्स की जो आंसर शीट होती है वो नहीं होती पेपर प्रेजेंटेशन के लिए दैट्स नेसेसरी नहीं होती है बट आंसर्स होते हैं देर आर इवन दिस व्हाट डू वी से सैम्पल पेपर्स भी इसमें अटैच्ड होते हैं थोड़े बहुत 7-8 कुछ अटैच्ड होते हैं सैम्पल पेपर्स ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं so you can buy this as well. Next, apart from that, there is EduCart also. EduCart is there again majorly for SST and science. It's very very useful. क्विक रिवीजन हो जाता है इसमें से है ना फटाफट रिवीजन हो जाएगा दिस इज फॉर योर यू नो 2 days बिफोर एग्जाम की बुक 2 days बिफोर एग्जाम दिस बुक इज फॉर दैट 2 दिन पहले एग्जाम के इसमें क्विक रिवीजन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो इनके खुद के क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस along with PYQ so this is all rounder book आप यूज कर सकते हो now, these three books, you will say, should we buy all three? No, not all three. You have to check as per your type कि आपको किस चीज की नीड है अगर आपको एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस चाहिए रहते हैं एनसीईआरटी से समझ नहीं आता डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए सो यू कैन टेक एड्यूकार्ट ठीक है इफ यू आर अ गुड स्कोरर है ना आप अच्छे स्कोर करते हो टॉपर हो सो यू कैन बाय योर टुगेदर विद फॉर प्रैक्टिसिंग if you're moderate, you can buy the Oswald books. That will be useful. So it is based on you कि आपका level कितना है आप उस हिसाब से books खरीद सकते हो. Next is sample papers. This is required during your pre-board और board के time पे. Do not buy it right now. उसका कोई use नहीं होगा. Pre-board और board के time पे खरीद लेना. क्योंकि why am I telling this to? क्यों? Because first of all ये 80 marks के sample papers होते हैं correct? दूसरा फुल सिलेबस होता है अगर आप अभी से खरीद के बैठ जाओगे आपका आधा सिलेबस भी नहीं हो तो व्हाट विल यू प्रैक्टिस सो इट्स वेस्ट सो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन योर प्री बोर्ड्स आर गोइंग टू स्टार्ट प्री बोर्ड स्टार्ट होने के अप्रोक्सीमेटली 2 महीने पहले हो जाता है सिलेबस खत्म सो 2 months आफ्टर दैट यू कैन बाय जब तक आपका जैसे आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा व्हेन योर सिलेबस गेट्स ओवर देन ओनली यू विल बाय अ सैंपल पेपर उसके अलावा उसके पहले खरीद के इट्स ऑफ वेस्ट टोटल वेस्ट सो व्हेन योर सिलेबस इज कंप्लीटेड आपने रिवीजन हो गया सब हो गया उसके बाद आप खरीदना दिस इज योर सैम्पल पेपर बुक दिस इज सॉल्व्ड पेपर दिस आई टेल यू एट द एंड ठीक है देखो तो सैम्पल पेपर की बुक्स आती है लाइक यू सी एन ओसवाल साइंस मैथ्स एसएसटी इंग्लिश सबकी कंबाइंड बुक है 80-20 सैम्पल पेपर्स है सो यू कैन प्रैक्टिस दिस okay during your pre-board and board exams sample paper this is for oswal again questions are very good नेक्स्ट है टुगेदर विद के भी सैंपल पेपर्स होते हैं 16 सैंपल पेपर्स फॉर ईच होते हैं 15 as per I have checked for this together with you have based on easy paper easy sample paper moderate होता है उसके बाद डिफिकल्ट होता है एंड प्री बोर्ड पैटर्न के ऊपर होता है these are 15 और वन एक ऐसे स्पेशल फाइनल मॉक टेस्ट के लिए होता है so you can buy these as well now again I will tell you when to buy which one okay और ठीक है ये हो गया अब सैंपल पेपर्स के लिए 2 books ऐसे दी ओसवाल and you're together with. When I talk about Oswal book you will buy when you're very thorough with the concepts because इसमें mostly questions होते हैं which are expected. पिछले साल के questions mostly बहुत rare देखे जाते हैं इन sample papers में. You see exclusive and unique होते हैं पिछले साल के नहीं होते. They are expecting कि ये questions आएंगे. So buy this only if you're very thorough
If you are very thorough with the concepts, then only buy this post-one book. Now, एनसीईआरटी हो गई है, नोट्स हो गए, यू आर वेल अवेयर, यू कैन बाय दिस, बिकॉज इसके जो सैम्पल पेपर्स होते हैं मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बने होते हैं, पीवाईक्यूज एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बने होते हैं ये वाले सैम्पल पेपर्स, आई हैव चेक्ड देम. So this is very much suitable if you are, you know, up top, if you're topper level, moderate level, you can buy this easily. You can buy this and practice. पिछले साल के भी हो रहे हैं एनसीईआरटी के, सब overall coverage हो रही है. Because these are repeated questions. These are not repeated questions. ये unique questions होते हैं which they are expecting and predicting to come. Okay. Next आता है PYQs के ऊपर books. I have included one book of PYQ जिसमें आपके पास हर सब्जेक्ट की पिछले 10 years के पेपर्स होते हैं. Now, when do you need this? Again, you need this. You can use this throughout the year. I will suggest during term exams. जब term exams चालू होने वाले, during that time you can use it. Now, what is the use? Most कोई कोई जो होते हैं वो chapter wise भी होते हैं और combined भी होते हैं. Chapter wise, what is this? जैसे let's say you're doing a maths. ठीक है, maths है. मैथ्स में आपके टर्म एग्जाम में रियल नंबर्स से लेके लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री तक आ रहा है. ओके, ट्रिग्नो तक, रियल नंबर से ट्रिग्नोमेट्री आपका टर्म एग्जाम आ रहा है. नाउ यू कैन नॉट यूज अ सैंपल पेपर. सैंपल पेपर उठाओगे इट्स ऑफ नो यूज, आपको आधे से आता नहीं है. सेकंड, अगर आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर उठाते हो तो उसमें भी सारे क्वेश्चन हो गए, तो इट्स नो यूज. सो रादर यू शुड बाय चैप्टर वाइज क्वेश्चन, है ना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की स्पेशल बुक. अगर आपको थ्योरी व्योरी कुछ नहीं चाहिए, इफ यू डू नॉट वांट थ्योरी, यू कैन से अरे हाँ थ्योरी तो आती है, सो यू कैन यूज दिस वन बिकॉज इसमें चैप्टर वाइज 2014 से 23 के क्वेश्चंस आते हैं, सो यू कैन यूज दिस. इट्स वेरी यूजफुल. बट एज आई सेड, पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज करो. ओके, बट प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स हो तो देन यू कैन इजीली, you can take the previous year paper. But term exams, periodicals के लिए you can use the chapter wise books. What is the difference between the last one and these? इसमें थ्योरी भी है. If you have, you say, if you are confident कि आपको थ्योरी अच्छे से आते हो, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, just for questions की practice, this is good for you. So that was about what are the best things. I have tell you the books, I have said you the strategy and everything. Now the ultimate thing is the your efforts and consistency. Consistency रहेगी, then only you can achieve very good marks in boards as well. So use these books appropriately. है ना? As I said, when you have to buy, what you have to buy. Pre-board, pre-board time and board time, you have exclusively you have to use your अगर गाइड ली है तो क्विक रिवीजन, है ना, नोट्स आपके जो आपने खुद बनाए ईयर के स्टार्ट से, एंड सैम्पल पेपर्स along with previous year papers, not questions, previous year paper. बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में फुल सिलेबस है, राइट. तो अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन लोगे सीबीएसई के वेबसाइट पे मिल जाते हैं, सो यू कैन यूज एंड डाउनलोड दैट, सारे सेट्स डाउनलोड करो एंड डाउनलोड एंड स्टार्ट सॉल्विंग. कौन से, प्री बोर्ड और बोर्ड्स के लिए. इफ यू डू दैट, these all things are more than sufficient. Nothing else is needed. Okay, so that was it for today. Along with that, videos, है ना, for explanation of chapters, that is useful. I'm also going to upload them NCRT के based reading, important questions, sample quiz. All of this will be available on the channel. Many of it is already there if you search back. So that's it for today. I'm going to see you in the next video. Till then, take care and goodbye. Also, make sure to like and subscribe and comment on और कौन से type की videos चाहिए for starting of grade 10. I will surely reply back. So thank you so much for watching. Stay tuned.